investigation as to who all were behind this kind of incident, because so far what we do know is that nobody has taken the responsibility. No student organization has come in front so far. So unknown miscreants is what we can say. They have done this kind of thing, but it's been now, Anusha, and since the intensity of the event is such that because the caste slur were clearly written, so imagine the mindset with which the people have written. So, and they are so-called the future of the country. And also at the same time, we should have a sympathy for the Brahmins as well, for the Banyas as well, who have been targeted. Sensitivity towards any community and modesty in language is required from each side. Very briefly, Nikhil, the politics between the left and the right at the JNU campus is very well known. Any word you've picked up from the students' union body? Well, the student union, both ABVP and the ISA, they have been blaming each other. The reaction came in first from the ABVP side. They have been clearly saying that unknown miscreants are the ones, particularly from those of the leftist side. And the ISA is the one who has been dominating the student politics of the JNU. And they have also issued the official statement, clearly alleging that the people who are behind this should come out and the internal inquiry should take place further. Thank you, Nikhil, for getting us all the details on that very important story. That story is something we'll continue to track. With that, it's a wrap from my side. Zako Jacob joins you with Viewpoint. It was not Mr. Lapid's job, even as the head of the international jury, to hijack the occasion and the platform. आपको तकलीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कोई बना उससे है कि आपको तकलीफ की ये परिवारवाद का लेबल आप पर चिपक गया उससे है? If there are enough and more issues that the Congress can raise as an opposition party in the state of Gujarat, then why is Mr. Mallikarjun Kharge talking about Riots? By saying vulgar propaganda, he's questioning the truth behind this movie. Will he deny the Holocaust? If he doesn't deny the Holocaust, then why should he deny the Kashmiri Hindu genocide? There is fresh controversy around Congress leader Jagdish Tytler, one of the accused in the 1984 anti-Sikh riots. Mr. Tytler has been campaigning for Congress candidates in the upcoming MCD elections. He says no court of law has found him guilty. Neither has any investigating agency managed to provide evidence of his involvement in the anti-Sikh riots. But almost all of these so-called clean chits that were given were when the Congress was in power. The last one was in 2015 when the court castigated the prosecution for doing a shoddy job. The question remains, why is the Congress party so dependent on Mr. Tytler, so much so that they're now using him for the MCD election? Congress ka haath is with a riot accused. That's Jagdish Tytler, accused in the 1984 anti-Sikh massacre, busy campaigning for Congress ahead of the upcoming MCD elections. This comes weeks after the party named Tytler as a member of their election committee ahead of the municipal polls. यही कहूंगा कि अगर जिसने 84 के दंगों में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा, ऐसे चेहरों को लेकर भी आज कांग्रेस जा रही है, तो हम तो जनता को बताते हैं कि एसआईटी का गठन भी 84 के दंगों पर किया तो मोदी सरकार ने किया और सिखों को न्याय दिलाने का काम किया. It's not the first time that Congress has given a platform to Tytler. In 2019, Jagdish Tytler got a front row seat at a Delhi Congress event. In 2021, he was made a permanent invitee to Delhi Congress Committee. And just a few weeks ago, Tytler was appointed as a member of Congress's MCD election committee. कांग्रेस दिल्ली को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं डाली तो फिर जगदीश टाइटलर जैसे दरिंदों को लाएगी और दिल्ली में कत्लेआम कराएगी. Tytler has been accused of leading mobs against Sikhs
in the riots that followed then Prime Minister Indira Gandhi's assassination by her Sikh bodyguards in 1984. 3,000 Sikhs were killed in Delhi in the violence. So why does Congress continue to defend Jagdish Tytler? All right, on the talking point this evening, RP Singh of the BJP is joining us. Dolly Sharma of the Congress Party will be joining us as well. Atma Singh Lubana is a 1984 riots victim. Siddharth Sharma, spokesperson of AAP, also joining us. RP Singh, let me start with you first. Mr. Tytler's claim, and this has been echoed by other Congress leaders as well, is that it's been 35 years since the riots. No court of inquiry, no commission of inquiry, no investigating agency has found anything against Mr. Tytler. Why are you continuing to hold him guilty? Well, case is not closed still. The court has reprimanded CBI for the shoddy investigation when it was the UPA-led regime. And then there are more evidence which has come now. Mr. Atma Singh Lubana will tell you that in detail, that he himself is witness to the cases now of 84. But there is more evidence which I want to show you. This is the book of GBS Sidhu Khalistan Conspiracy. In this he mentioned, let me just go to the page, he mentioned on page number 219 about detail about how there was a team which was led by Mr. Sanjay Gandhi and then by Rajiv Gandhi, and Mr. Tytler was part of that team which planned this complete 84 massacre. Not only that, he executed it. He was part of the person who planned the conspiracy. Had Mrs. Gandhi not been killed, even then something of this sort would have happened. Okay. They wanted to paint the most nationalist minority as the demon to garner the majority vote. This is not I am saying. This is GBS Sidhu's book, The Khalistan Conspiracy, which has not been challenged by any Congress leader. Neither defamation case has been filed by any Congress leader against this. But that point aside, there is video on record, which is a sting operation on record, where Mr. Tytler is saying that I took Mr. Gandhi along with me around the CP to show him how the things have been executed. So this is the fact, and then it's matter of time because they were in power, they misused the power to get exonerated, but it's matter of time. Sajjan Kumar. Okay, let me ask Dolly Sharma of the Congress Party. Dolly Sharma, the Nanavati Commission had hinted to Mr. Tytler's role. In 2015, when this case got last dismissed, the Sessions Court at that time had completely taken the CBI to task, saying that they have done a shoddy job of the investigation. The point is that there is reported evidence, reporters who covered it, there is evidence from people like Mr. Lubana and other victims, thousands of them, that Mr. Tytler, Mr. Sajjan Kumar, HKL Bhagat were all leading the mobs on the night after Indira Gandhi's assassination. Why does the Congress Party still need Mr. Tytler, who's in his 80s, to campaign for the MCD elections? Have you heard Mr. Amit Shah saying few days ago in Gujarat कि हमने सबक सिखा दिया उनको और गुजरात में फिर वापस वो कभी नहीं हुआ. हमारे गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं. तड़ी पार का मतलब होता है कि जिसको the person who cannot live in the society. आपने सिखों को सबक सिखाया था. आपने सिखों को सबक सिखाया था. यही कहा था राजीव गांधी ने, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. यही कहा था ना राजीव गांधी ने, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. आपने सिखों को सबक सिखाया था अपने इलेक्शन जीतने के लिए. आपने पूरा प्री प्लान किया. आपने आरपी साहब, I'll come back to you. उनको बात तो रखने दीजिए. आरपी सिंह साहब, उनको बात रखने दीजिए. आपके पास उसके बाद आऊंगा. ओनली डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन. डॉली शर्मा. यस जी बोलिए. ऐसे कौन डिबेट कर पाएगा? जी बोलिए. जब वो बोले तो मैं नहीं बोली. बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए. आई एम सिंपली मेकिंग दिस पॉइंट कि सीबीआई ने भी उनको, आपने खुद ही बताया कि क्या जजमेंट दिया. उससे पहले भी उनको जो जजमेंट दिया वो सबको पता है. और लगातार ये जो आज भाजपा इस बात पर सवाल उठा रही, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि खुद गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं. तड़ी पार का मतलब होता है द पर्सन हु कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी, एंड दे आर अगेन रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द केसेस व्हिच हैज हैपेंड
खत्म हो गई जो बातें। नहीं, उनको अगर आप वापस कह से रही उठा हैं, रहे नहीं हैं, डॉली शर्मा, अगर आप कह वापस रही से हैं उठा कि रहे नो हैं। कोर्ट हैज फाउंड हिम गिल्टी, तो आपकी उस लॉजिक से अमित शाह has also been exonerated by every court that went into all the cases against him. This is तो what I'm saying. This तो is वो what I'm लॉजिक saying. बैठता Then नहीं है why ना आपका जो BJP? लॉजिक है। This is what I'm saying. Why BJP is raising this again and again? Then No, my फिर तो point देश is के court of प्रधानमंत्री law भी is one thing. कन्विक्टेड थे ना एक गोधरा सेकंड में। मैडम सुन लीजिए, सवाल If सुन we लीजिए। say we respect the Court of Supreme law Court, is one if we thing. say we Shoddy respect the investigation is CBI, something else. Evidence on the ground of victims, reporters, सब लोगों ने देखा है. It's well documented that Mr. Tytler, Mr. Kumar, Mr. Bhagat were all there on ground the night after Indira Gandhi's assassination, going rounds from one place to another. ये मतलब this is part of recorded history of Delhi. Sir, everybody has seen what Amit Shah ji was quoting 2-3 days ago in Gujarat also. नहीं तो उसका और इसका क्या लेना देना है, ये बताइए। उसका और इसका क्या लेना देना है? You must have heard of the statement. You must have heard of the same statement. No, I'm asking you, what is the connection between that and Congress party using Jagdish Tytler? कनेक्शन क्या है दोनों चीजों के? कभी नहीं हुआ। अगर आप उनको क्लीन चिट देते हैं तो किसी को, अगर सीबीआई बोल रही है, सब बोल रहे हैं, आप उसमें इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो या तो फिर वहां पर इस तरीके की बायसनेस क्यों आती है? अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सीबीआई का जजमेंट अगर और केसेस में कुछ और कहता है, उनको बाइज्जत बरी कर देता है, तो इधर क्यों नहीं करता? आत्म सिंह लुबाना है हमारे साथ, वो एक 1984 राइट विक्टिम है, वो बताएंगे आपको। लुबाना जी, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के कहना ये है कि देखिए, ना कोई कोर्ट ने उनको दोषी करार किया है, ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई सबूत ला पाई, तो फिर किस चीज पे, और 30-35 साल हो गए, किस चीज के आधार पर, किस एविडेंस के आधार पर आप अभी भी जगदीश टाइटलर को दोषी मान रहे हैं? लुबाना जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगदीश टाइटलर की और सज्जन कुमार की टिकट इन्होंने क्यों काटी थी। इनको आप मेरे को इस बात का बता देंगे कि जब पंजाब के लोगों ने और दिल्ली के सिखों ने और पंजाब के सिखों ने और पूरे वर्ल्ड के अंदर सिखों ने जब कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था, तब जाके सोनिया गांधी ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की दिल्ली में लोकसभा चुनावों में टिकटें काटी थी। ये मैं सच बोल रहा हूँ ना जी? इसका आपके पास कोई जवाब है? दूसरी बात, टाइटलर का केस, टाइटलर ने कहा था, अभिषेक वर्मा जो हैं इसमें मुख्य गवाह हैं, टाइटलर के केस में अभी भी रोज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें 2 विटनेसेस हैं और कोर्ट ने पिछले 1 साल से 164 के बयान दर्ज करने का ऑर्डर किया हुआ है और उसमें सज्जन टाइटलर को के खिलाफ उनके बयान दर्ज कराने थे। 164 की स्टेटमेंट कोर्ट में दर्ज होनी थी। जब वो कोर्ट में केस चल रहा है तभी तो दर्ज है। अभी नेक्स्ट डेट दिसंबर की ही है, इसी महीने की ही है, 23 दिसंबर की जी। तो ये जो है आप कह रहे हो कि कोर्ट केस नहीं चल रहा, क्लीन चिट दे दी। इन्होंने क्या किया, दोनों गवाहों को परचेज करके उनके सारे परिवार को यहाँ से दिल्ली से इंडिया से बुला के अमेरिका भेज दिया। ये तो काम टाइटलर करता है। और अब जो 2 विटनेस है वो बुज़ुर्ग हैं, हम बार बार उनको कह रहे हैं, ये जानबूझ के कोर्टों में इस केस को डिले करने के लिए अपील डाल लेते हैं, उनका डिसीजन आता नहीं है। वो कोर्ट जो ट्रायल केस है वो चलता नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जिनकी विटनेस की उस टाइम 30 साल 35 साल की उम्र थी, अगर 40 साल इनको प्लस करें तो 40 और 40 80 साल हो जाते हैं जी। अगर 30 साल थी तो 70 साल हो जाते हैं उनके। तो वो ये चाहते हैं इनके कोर्ट में स्टेटमेंट ही ना होने दो। हम बार बार कोशिश करते हैं, हमने मोदी जी से कहा और अमित शाह जी से कहा कि स्पेशल कोर्ट बना दो जो डे टू डे सुनवाई करे और उसमें टाइटलर का केस होना चाहिए। जो विटनेसेस हैं उनकी गवाही ट्रायल में हो जानी चाहिए। ओके। अगर वो मर जाएंगे फिर क्या फ़ायदा होएगा उसका केस शुरू होना। ये इन्होंने जानबूझ के, टाइटलर ने बड़े बड़े वकील करके
कोर्ट में अपील डाल के केस को डिले करने का इन्होंने बहाना बनाया। ओके, सो ही इज बीन डिलेइंग द ही इज यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स। सिद्धार्थ शर्मा जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 7-8 साल से दिल्ली में, आपने क्या किया 1984 दंगों की जो विक्टिम्स है उनके लिए और उनके फैमिलीज के लिए, उनके लिए जस्टिस के लिए? आप क्यों नहीं कमीशन बैठाते हैं? व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ फास्ट ट्रैक कोर्ट? आफ्टर ऑल इट हैपेंड इन दिल्ली और आप दिल्ली में सरकार में हैं। Yeah, Zaka, the 1984 Sikh program was a macabre injury on Delhi. Everyone knows that. And to make its captain its star campaigner is adding insult to it. Mr. Rahul Gandhi doesn't find time to come to Delhi, do his Bharat Jodo Yatra, but he finds time for Mr. Jagdish Tytler to campaign in Delhi. The other thing that the victim Lubna ji has very clearly given out is that the BJP also cannot absolve itself since the police is with it and it has not prosecuted Mr. Jagdish Tytler as of now. Now, as far as your question of Aam Aadmi Party is concerned, everyone knows that law and order is not a state subject in Delhi. Aam Aadmi Party doesn't have it. At best, that we can do is provide some kind of relief to the victims. And we are trying our level best to do that. But here the point is not about relief, but justice. Justice has to be served by the governments which have police proposal. Unfortunately, in the last 38 years, BJP and Congress both have been in power in center, but they have not found it fit enough to put Mr. Jagdish Tytler behind bars, in spite of the court saying that आरपी सिंह साहब, his cases पिछले 8 साल से आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली पुलिस आपके पास है, आप क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करते हैं? व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड वंस एंड फॉर ऑल पुट एन एंड टू दिस? मतलब अभी तो 30-40 साल हो गए हैं इसके बाद। Zaka, I'm shocked. The Aam Aadmi Party analysts never gave answer. One second, RP Singh, yeah. Zaka. No, RP Singh, yeah. जी. He didn't, sir, he didn't answer your question. इन्होंने नहीं बोलिए लुबना जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आरपी सिंह फर्स्ट, या तो वो एसआईटी बनाने का प्रॉमिस किया था केजरीवाल साहब ने कि मैं एसआईटी बनाऊंगा, मैं उसमें जो लोग दोषी उनको सजा दिलाऊंगा। दिस वाज द प्रॉमिस ही मेड। वो एसआईटी बनी नहीं आज तक, ना बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी पहली बार इन्होंने, और तब ये लेन देन हुआ था। उस दैट वाज पार्ट ऑफ दैट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली कि नहीं, वी विल सीक योर सपोर्ट बट एंड यू सपोर्ट अस एंड विल एक्सोनरेट यू इनटू ऑल दिस फ्रॉम ऑल दिस केसेस, and in that SIT was quashed. No SIT was made, sorry. So that point aside, but coming to the issue, I am telling you today, Sir Zaka, please check on the court details. I am the one who has followed up each and every date of Sajjan Kumar, each and every date of Dhingra Committee Commission. I am the one of the interveners as a National Secretary of the BJP in 1984 case also of the Dhingra Committee, where I am following up for the action taken report of the on Dhingra Committee. But I am assuring you today, wait for another few months. I have to put a tweet today also that I am going to follow it up, ensure that what Mr. Atma Singh Lubana was telling, in December there is a date, we will ensure that all statements are recorded under Section 164, so that people who are still alive, their statements should be recorded, and then Mr. Tytler, news on Mr. Tytler's neck also will be tightened. Okay. Lubana ji, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस के अंदर टाइटलर का जो ट्रायल केस चल रहा था पहले कड़कड़ डूमा कोर्ट के अंदर जी, उस टाइम एक अभिषेक वर्मा जी हैं जो एक घोटाला किया था मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर, डिफेंस डील में घोटाला किया था, उसमें वो अक्यूज भी हैं, और उन्होंने बताया, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मैं आपको सच बताना चाहता हूं, टाइटलर ने एक फार्म हाउस पे हरियाणा में फार्म हाउस में मेरे साथ मिला था, और टाइटलर ने मेरे को बताया कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात हो गई है मेरी, और अब मेरे को क्लीन चिट मिलने वाली है। वो उनके प्रेशर से इन्होंने क्लीन चिट लेने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि एक ही विटनेस है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एक के अलावा और भी विटनेसेस हैं। मैं खुद सज्जन टाइटलर के खिलाफ विटनेस हूँ, मेरा अभी तक इन्होंने बयान भी नहीं दर्ज किया। मैंने इसको खूब अच्छी तरह से टाइटलर को पुल बंगस गुरुद्वारे के बाहर इसको देखा था मैंने।
तो ये बयान कोर्ट में अगर ट्रायल शुरू होगा तभी तो हम बयान दर्ज कराएंगे ना, कैसे कराएंगे? सीबीआई को हम बोलते हैं, सीबीआई को आम आदमी से किसी से झगड़ा हो जाए तो पहले वो पुलिस जो है पहले उनको अरेस्ट करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन इसमें उल्टा काम इन्होंने किया है, पहले कहता हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर इसको अरेस्ट करेंगे। तो कितने साल करेंगे इन्वेस्टिगेशन? अभी तो 40 साल हो गए, कितने और साल करेंगे इन्वेस्टिगेशन? हाँ, अभी तक 40 साल हो गए, इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है। पहले टाइटलर को जेल के अंदर भेजा जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन करें। मैंने एफिडेविट दिया है एसआईटी को। लेट मी गो बैक टू डॉली शर्मा। कमीशन में एफिडेविट दिया है। डॉली शर्मा, प्लीज रिस्पॉन्ड व्हाई there has been no action. Forget about action. Why this dependence on Jagdish Tytler? He is an aging leader. It's not like he has some great constituency or community vote or vote bank in Delhi. So why do you have to depend on him for the MCD polls? And secondly, I keep coming back to this, all the clean chits that he got, all the clean chits that Jagdish Tytler got from the CBI and from courts of law was when the Congress was in power. 2015 Congress was not in power, sir. उस दिन कोर्ट ने क्या बोला है सीबीआई को, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? जी. Do you want me to read what the court said, the Sessions Court? It rejected the closure report. One second. It rejected the closure report, ordered an investigation into the role of Jagdish Tytler, and it has said that the CBI and the prosecuting agency did a shoddy job while trying to give a clean chit to Mr. Jagdish Tytler. Nanavati Commission had hinted the role of Mr. Jagdish Tytler, and yet successively CBI did nothing to bring prosecutable evidence against this gentleman. ये कोर्ट ने बोला है. The court has said this while rejecting the closure report. From last 8 years, Congress is not in power, and BJP, who is blaming every time, should come out in open, help the people who are facing the problem, help who are saying that we have seen it from their own eyes. They should help them so that the clear judgment is made. No, they don't want help, ma'am. They want justice. I am telling justice you, कौन on देगा the उनको? national television. नहीं, justice कौन देगा उनको? उनको इंसाफ चाहिए, मदद नहीं चाहिए उनको. जिनको इंसाफ, मैंने आपको अभी भी बोला कि 8 साल से आप ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस पावर में थी. 8 साल से कांग्रेस पावर में नहीं है. 8 साल से कांग्रेस पावर में नहीं है. अब जो भी कुछ बीजेपी कर सकती है या जो भी कुछ कोर्ट ऑफ लॉ करे वो करे, इंसाफ मिले. आरपी सिंह साहब, इसका तो जवाब बनता है कि 8 साल से क्यों ये रुका पड़ा है. 8 साल से तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है. आप बताइए ना सर. मैं इसका जवाब देता हूं. एक सेकंड लुबाना जी, एक सेकंड. आरपी सिंह सर अच्छा, लेट आत्मा सिंह आंसर. नहीं जाकर लेट आत्मा सिंह. अच्छा ठीक है, लुबाना जी बोलिए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगदीश टाइटलर ने एक अननोन नाम से सुरेंद्र सिंह के बेटा और बहन के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाल दिए, जो कि वो कनाडा में है अकाउंट. वो कनाडा सरकार ने उस अकाउंट को सीज किया हुआ है और उसके ऊपर प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर चल रही है. वो डिसीजन जो है भारत सरकार और कनाडा सरकार का आपस का सरकार का वो डिसीजन है. इनकी जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके साथ वार्तालाप वो कर रहे हैं. वो पैसा उन हमारे जो सुरेंद्र सिंह विटनेस थे मेन टाइटलर के खिलाफ, उसका बेटा और उसकी बहन के अकाउंट में कैसे आया 5 करोड़, किसने दिया? नहीं, वो बात भी डाला है वो बात सही हो सकती है. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं लुबाना जी कि इस केस में जहां 2-3 हजार सिखों को मारा गया, एक विटनेस से ज्यादा तो होगा ही. हाँ, मेरे ख्याल 2 विटनेस अभी और भी है ना, उनकी ट्रायल नहीं शुरू कर रहे. हम क्या करें, हम बताओ. तो उनका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है?
जब तक कनाडा गवर्नमेंट इसकी क्लियरेंस नहीं देती 5 करोड़ किसने जमा कराया, बिल्कुल क्लियर तस्वीर नहीं होती। अभिषेक वर्मा का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट हो चुका है इसमें। उसने जो आरोप टाइटलर के ऊपर लगाए थे उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कोर्ट ने करवा लिया है। वो भी अभी इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, उसको सीक्रेट रखा हुआ है। और वहाँ से जो लेन देन आदान प्रदान बातचीत हो चाहिए कनाडा सरकार से, उसको भी इन्होंने कोर्ट में गुप्त रखा है कि जी सीक्रेट बात है जी, हम नहीं करते। और इसी ग्राउंड पे टाइटलर को हर बार डेट मिल जाती है और आगे प्रोसीडिंग नहीं चलने दे रही। बताइए ये सब चीजें सीक्रेट क्यों है? ये तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आरपी सिंह साहब, जाका बिल्कुल आना चाहिए। Mark my जी Zaka mark जी बिल्कुल Zaka mark my word, the case is in Rouse Avenue Court. The matter is being seriously followed up, and it's matter of not before not next Vaisakhi. Mr. Tytler will not see the Vaisakhi outside. He will be in jail because there are the polygraphy test of the key witness Abhishek Verma has been taken, as he was telling, and also that person in whose account the money was transferred and how Abhishek Verma helped him Tytler to send that person abroad and how the money was transferred. This is all come on record. It's a matter of time. Mr. Tytler was a big, tall leader here. He has used his influence throughout, but now the time is over, and then it's a matter of time before Tytler will be shown the door. But question still is the same. Hey, give me a second. Question is still the same. Why they use Tytler? I'll answer that. The reason they use Tytler and they're scared of Tytler, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, because they know if they do something against Tytler or they don't allow Tytler the freedom which political freedom which he wants, Tytler will spill the beans how Rajiv Gandhi was kingpin in the 1984 massacre which happened in India, in Delhi. Okay, we'll leave it at that. RP Singh, Siddharth Sharma, Dolly Sharma and Atma Singh Lubana. We'll leave it at that. We'll see how this progresses. All right, we're getting a piece of breaking news that's coming right now. Karnataka government has now written to the Maharashtra government. This is on the upcoming visit of Maharashtra ministers to Belagavi, saying that this visit or such a visit is not appropriate. The Karnataka chief minister has hinted that the visit of these ministers need to be stopped at law and order grounds. Let me play out that bite of Basraj Bommai and then we'll go across to Harish Manpal. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. All right, Harish is now joining me on the phone line. Harish, Mr. Bommai, writing to the Maharashtra government, asking for these ministers not to be sent there, and also giving a hint, if you will, that this would be seen as a law and order issue by the Karnataka government if the ministers were to go to Belagavi. Absolutely. In fact, Bommai says that if they do indeed go forward with their plan, then we will take action that has been taken earlier during such circumstances. We've seen the state quoting law and order as an issue and stalling any such attempt of any organization from Maharashtra coming to Belagavi, especially whenever this issue has cropped up. Also, we've seen prohibitory orders being put in place. So state indicating very clearly that they will not encourage this visit. Has to be seen if the Maharashtra government will now respond to this letter written by the Karnataka Chief Secretary and asking Maharashtra Chief Secretary to ensure that these two ministers do not come to Belagavi. So, I believe it was supposed to happen over this weekend on the 3rd and then it's been pushed to the 6th, next Tuesday. But if indeed these two Maharashtra ministers were to come, if they were to get the go-ahead from the Maharashtra government, because they can't also be seen as climbing down on such an emotive issue, then is the sense that you're getting from the Bommai government that they'll be stopped at the borders, not be allowed to enter the district borders? Absolutely. That was the plan if these ministers had gone ahead with their plan of visiting the Belagavi district on 3rd. Even on 6th, the government is unlikely to change that. In fact, the senior police officials from Belagavi and Karnataka had an interaction with their counterparts in Maharashtra as well, trying to ensure that the security at the border is stepped up because these ministers are likely to come
with their bunch of supporters as well. So the police were in fact gearing up to ensure that these ministers and the supporters were stopped at the border. In case these two ministers go ahead with their plan, we are likely to see the police stopping them at the borders on the 6th as well. All right, Harish, we'll leave it at that. Thanks very much for joining us. Let's now go across to Ahmedabad, where we're getting live pictures, or awaiting live pictures of the Prime Minister's roadshow. Remember, he's been campaigning there. He had a massive roadshow yesterday. Today, I think he addressed about 3 or 4 rallies across the city and in the wider district as well. And now we're given to understand that the roadshow is due to begin anytime now. Siddhant is joining us live. Siddhant, walk us through what you're seeing around you. Well, that's right. So we are in Asarwa constituency, Zaka, and this is the bastion of Bharatiya Janata Party. So Prime Minister is going to cover Asarwa constituency, Daryapur and Jamalpur constituency. Then he's going to address one Sabha, which is probably going to be the last Sabha of Prime Minister in this Vidhan Sabha election. Right behind me, you can see the pilot of the Prime Minister, in some time, pilot vehicle of the Prime Minister's convoy. And in some time from now, Prime Minister is going to cross this particular location where I'm reporting from. You can see electrifying atmosphere right here where we are reporting from. I can also hear Modi Modi chants, and people have come out here in large numbers, Zaka, to catch a glimpse of Prime Minister. And there you see, Zaka, the Prime Minister's convoy is arriving, and this is going to be of the 15 kilometers long road show, which is going to cover 3 constituencies. People have gathered on both sides of the roads in large number. You know, I would also like to interact with some of the women here. कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? हाफ एन आवर से। हाफ एन आवर से खड़े हैं प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। हाँ, सिर्फ वो मेरे बेटे को देखने के, उसको आपके बेटे को देखना है? हाँ, तो उनके लिए आप आए? हाँ, वो खड़ा है, उसको 3:30 से खड़ा है। 3:30, हाँ, हाँ जी। From 4:30. 4:30. Yeah, she is so excited. So there you see the excitement, Zaka, behind me, and I guess this is the Prime Minister's pilot convoy, which is approaching this place where I'm reporting from. Electrifying atmosphere here on the streets of Ahmedabad. Prime Minister, son of soil, is back in his bastion, the place where he started his political journey from. And Zaka, we have also been told that he's going to go and seek blessings of Bhadrakali goddess. He is a devotee of Bhadrakali goddess, and he's also going to seek blessings of goddess Bhadrakali. We'll speak to किसी ने यहाँ पे भारत माता के जय के श्लोक लेना। हाँ जी, हाँ जी। क्या नारे लगा रहे हैं आप लोग? भारत माता की जय। So there you see people have gathered here in Ladha ji. प्रधानमंत्री को देखने आए। कितनी देर से खड़े? 3 बजे से खड़े हुए हैं और अभी तक आए नहीं, आ रहे हैं। Okay. So there you see Zaka, you know. All right. People have gathered here in large number, and there you see Prime Minister is going to arrive and will cross this lane where I am reporting from. I can see the lights of the Prime Minister's convoy, and they all are. And also, Zaka, one very important point I would like to highlight here is that this roadshow was not mentioned in Prime Minister's schedule. This is, in fact, a surprise roadshow because Prime Minister was going to take this route. So this route was converted into a roadshow. This is